Hello everyone, good evening. So we were doing what? So ninth class mathematics complete. Okay, we have done many things. For example, there are only two chapters are left. First one, Introduction to Euclid's Geometry. Second one, Statistics, means data handling and all, mean, median, mode and all. Okay, so these two chapters are left. We are left with only these two chapters, and other chapter we have completed. So let's do this chapter today, Euclid Geometry. So what is Euclid Geometry? See, in 300 BC, it means 300 years before Christ. It means 2300 years ago from today. Let's say a mathematician named Euclid. He gave some rules. We use those rules as a base to prove any theory. For example, let's say if A is equal to B, A is some quantity. A can be a length of a line segment and B can be a length of a line segment, and B is equal to C. So from these two statements we can conclude that A must be equal to C. But how did you prove that if A is equal to B, B is equal to C, how can you say that A is equal to C? Because it is a basic. We call it axioms. We can call him axiom, because axiom is like you don't have to give proof of it, or postulate. We don't have to give proof of it. We just have to use them to prove something bigger than it. Okay, so they are like building blocks. Let's say you are making a structure, a building. Okay, you are making a stick, using a stick you are making a model. Okay, so what you will do, you will make different part of that model using that sticks. But what about those sticks? What is the existence of those sticks? Sir, I bring those sticks from market. Okay, so you didn't have to make that sticks. Okay, so whenever you have to prove something, or whenever you have to make something bigger, you have to start with a smaller thing, and that smaller thing should be exist. Like there should be not that like, sir, it should be also made by someone. It should be also have to be made by someone. No, it's in nature. Okay, so it's in nature, sir, that if A is equal to B, then B has to, and B is equal to C, then A has to be equal to C. It's in nature. No one has to prove it. Okay, so this is kind of axioms. So let's start this chapter. Okay, so history and importance of geometry. The term geometry comes from Greek word geo, means earth, and also land. Land and earth, both we can use. Metron means measurement, measures. It arises from the necessity to measure land, particularly in ancient civilizations. Geometry was essential for practical problems such as land surveying and construction. See, sir, why we call it geometry? See, answer for this question we find in history. हिस्ट्री में हुआ कि किसी को लैंड का एरिया है, दो भाइयों में डिवाइड करना है. यू हैव अ लैंड एंड यू हैव टू सन्स. यू हैव टू डिवाइड इट इन योर टू सन्स. देन हाउ टू डिवाइड इट? लाइक if you have this kind of land, sir, simple, divide this. But if you have this kind of land, now it will be hard to divide it into equal two parts. So from here concept of areas arises. That you have to divide this into two parts, such that the area is what? The property of land. Let's say property of a land. It's a property of land. Bigger land has bigger area. Okay, then you have to divide it into such a way that this property should be divided into equal. That property, which known as area, should be equal for both the parts. Okay, so from here we humans made a concept of area. Okay, now
For example, the ancient Egyptian developed method for redrawing boundaries after the Nile River flooded. Okay, like ancient Egypt, you know where is Egypt? And especially I'm talking about the area of nearby Nile River. Nile River used to be get flooded every year on a say on some time like in this month or this month. So they used to make a boundary that you don't have to go, you don't have to cross this boundary after in this month or in this month. So they used to make this boundary with the help of geometry. Okay, Euclid definition, axioms, and it's not add, it's and postulates. Euclid definition of basic geometry terms. Euclid geometry is based on logical reasoning where abstract concepts such as points, lines, planes are used to describe the world. These geometry concepts were derived from everyday experience. Hello. Yeah, it's in North Africa. If you draw the let's say this is Africa, then you will see the Egypt is somewhere here. Okay, some part, and here you have Nile. Sorry, not Nile. You have here you have Saudi Arabia, and here you have a famous man-made river kind. I'm forgetting its name actually for now. Okay, Suez Canal. Suez Canal. So this is what Egypt is. Here, somewhere here, Egypt. Okay. So now Euclid geometry is based on logical reasoning where abstract concepts such as points, lines and planes are used to describe the world. These geometry concepts were derived from everyday experience. Okay, you will see what are these postulates, and you will see that, sir, if I were in the time of Euclid, I also can find this because this is so logical thing. Yeah, see, for today's world, Mediterranean Sea. See, yes, Mediterranean Sea is this part. So अगर तुम उस अब तुम्हें लगेगा कि यार मैं उस वक्त में होता तो मैं भी ये चीज़ दे सकता था और यूक्लिड की जगह मेरा नाम आता, ये कहने में इजी लगता है, बट उस टाइम के हिसाब से अकॉर्डिंग टू दैट टाइम यूक्लिड ने जो ये बातें कही ये उसे एक लेजेंड बनाती हैं. उस टाइम में किसी का दिमाग इतना आगे नहीं सोच में गया होगा. जो यूक्लिड ने जो बातें कही वो सामने थी, बट उसको डिस्क्राइब करना ये यूक्लिड ने करा. फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटी, like before Newton there was no gravity. Sir, there was gravity. Newton just described the gravity with the help of equation and all. So why Newton is famous? He didn't discover the gravity. Like concept of gravity was there before Newton. Newton used what? Mathematics. Newton made some formulas to calculate the gravity, the force of gravity, the acceleration of gravity. Okay, so all these things, all these postulates were already there, they were already existing in the world, but Euclid gave them a specific definitions. He used words and all. Okay, let's go. Point. What is point? Point is a dimensionless thing which shows a position in a space. For example, this point. What is the length of this point? Sir, it has some length. We can see it has some length. Yeah, actually in real world you cannot make a point, because we live in 3D world. We can't make a dimensionless thing here. Discovery and invention are different. Yeah, discovery and invention are different. So point is a dimensionless which shows a position. Okay, sir, two points are there. They are different. Can they represent same position? No. For a one position there is a unique point. Every point represent a unique position. Sir, a point can represent two different positions? No, it's not possible. A single point can represent a single position in a space. Okay, let's go for next. And point has how many dimensions? 0 dimension. Now next we have line. Line has one dimension. You cannot make on this board a perfect line which has only one dimension. For example, this line. So sir, this line has only this dimension. It doesn't have any width. Actually this one has some width.
if you see it closely, I can see many pixels. Like the, for example, for width of this 1 2 3 4 5 6, at least 6 pixel I can see here. At least 6 pixel I can see in the width of this line, in the width of this line. So I cannot make a perfect 1D 1D line. Why, sir? Because I live in 3D world. So for me 1D world does not exist for me. For you, you and me all are live in a 3D world. Okay, so we cannot make such a shape which is only one dimension. You may if you take, instead of this line, sir, take a paper, take a paper. Okay, paper also has some width. Paper actually 2D thing, but also like paper can be considered as a 2D thing, but not a perfect. Why? It has some width. It has some width. Okay, so line is what, sir? It look like this. Okay, what is line? A line has only length and no breadth. It extend infinite in both the direction. It can be extend to infinite in both the direction. All the universe will get ended, but this line will never get end. Okay, that's the or actually this is a theoretical thing. Okay, a plane is a flat surface that extends infinite in all the direction. For example, this screen can represent a plane, a perfect plane. No, as I told you, we live in 3D. We can't make a 2D thing. Okay, whatever you will try to make, like for example paper. Okay, no matter paper, you know, in the width of paper, only I'm talking about width. This is what, let's say this, I'm not talking about this, I'm talking about thickness of a paper. Thickness of paper contain millions of atoms. If somehow, let's say this is paper, and if I do this rotation, you will see in microscope level you will see this, microscopic level you will see this, and there are millions of atoms in the thickness of it. Sir, if you make a thin paper, then okay, how thin? Sir, we can make such a paper which has only one atom place in the thickness, only one atom place, but it has a thickness. Still it has a thickness. So that's why I'm saying, if you are living in a 3D world, okay, we are living in 3D world, we can't make such a shape which are 2D, 1D or 0 dimensional thing. We can't make them. Okay, so what is plane? Plane is like this one. Or plane look like this. Sir, it's a rectangle. No, actually I have some limitation. I cannot make a plane which has infinitely large. I can't make a plane which is infinitely large. I have some limitations, so I just show you it look like this, but you just have to imagine that it's infinitely large. Okay, you have infinitely large paper sheet. That's what plane is. Now, Euclid introduction, axioms and postulate. What is axiom? Axioms are general, self-evident truth in mathematics. Postulates are assumption specific to geometry. Okay, let's talk about for axioms. Examples of axioms. For example, things which are equal to the same thing are equal to one another. Okay, one example we just showed: A is equal to B, B is equal to C. Then A and C has to be equal to each other, because A is equal to B and C is also equal to B. So both are equal to a same thing. Then both of them should be equal to each other. Sir, please Hindi. Aditya Singh. Okay, Aditya. Okay. तो axioms are what? Axioms क्या है? Self-evident truth in mathematics. For example, A इक्वल है B के. A is a number. A एक नंबर है, वो B के इक्वल है, और C एक नंबर है, वो भी B के इक्वल है. तो A और C भी इक्वल होंगे. And some examples of postulate: a straight line may be drawn from any point, one point to any other. Okay, ये क्या बोलता है axioms? अगर मैं आपको 2 पॉइंट दे दूं, कहीं पर भी, मेरी मर्जी होगी, कहीं पर भी,
क्या आप ऐसी स्ट्रेट लाइन बना सकते हो जो इन दोनों को कनेक्ट करती हो? आप हमेशा ये कर सकते हो, नो मैटर आप कहां पर पॉइंट दे दो। मे बी मेरा एक पॉइंट यहां है और एक पॉइंट यहां है, ओके एक पॉइंट मेरा यहां है, एक पॉइंट मेरा यहां है। क्या आप एक ऐसी लाइन बना सकते हैं जो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाती हो और वो स्ट्रेट होनी चाहिए, वो एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए? यस सर, ऑलवेज you have 2 point, you can always connect them with the help of one single straight line. You can always connect them with a single straight line, no matter वो पॉइंट कहाँ है स्पेस में, कोई फर्क नहीं पड़ता वो पॉइंट कहाँ है स्पेस में। यू कैन ऑलवेज मेक अ लाइन विच कनेक्ट 2 पॉइंट्स। सो सर इसका प्रूफ है क्या? इसका प्रूफ ही, यही तो प्रॉब्लम है, पॉस्टुलेट्स में आपको प्रूफ देना नहीं होता है, ये नेचर में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, हमें तो बस इसको कंसीडर करना होता है। बट सर इसे कंसीडर करने से फायदा क्या है? बिकॉज इसको कंसीडर करके ही आप आगे बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक यहाँ पे पॉइंट लिया, आप इस पॉइंट पे से कितनी लाइंस बना सकते हो? ऐसी कितनी लाइंस बना सकते हो कि जो इस पॉइंट से निकले? सर इनफाइनाइटली मैनी। दिस इज वन, दिस इज वन, दिस इज अनदर, ओके दिस इज अनदर, दिस इज अनदर, सो इनफाइनाइटली मैनी। सो यहां से मुझे एक बात पता चलती है कि अगर आपके पास ये इंफॉर्मेशन है कि एक लाइन है जो इस स्पेसिफिक पॉइंट से निकलती है, तो आपके पास उस लाइन की सभी इंफॉर्मेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट से निकलने वाली तो बहुत सारी लाइन है, इस पॉइंट से निकलने वाली तो बहुत सारी लाइन है। तो इसका मतलब ये इंफॉर्मेशन, दिस इंफॉर्मेशन दैट देयर इज अ लाइन व्हिच पासेस थ्रू दिस पॉइंट, दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट इनफ टू आइडेंटिफाई दैट लाइन। ये इंफॉर्मेशन इनफ नहीं है। अमान, माय नेम इज अमान, ये इंफॉर्मेशन इनफ नहीं है एक लाइन को पहचानने के लिए। ओके अब मैं कहता हूं कि एक लाइन है, देयर इज अ लाइन विच पासेस थ्रू दीज 2 पॉइंट, एक लाइन है जो इन 2 पॉइंट से निकलती है। अब आप बताइए आप कितनी लाइंस बना सकते हैं? गाइस हु आर वाचिंग दिस वीडियो, कैन यू लेट मी नो, अगर मैं आपको 2 पॉइंट दे दूं, ये 2 पॉइंट, और आपको एक ऐसी लाइन बनानी है जो इन दोनों पॉइंट से निकलती है, ऐसी आप कितनी लाइंस बना सकते हैं? ऐसी कितनी लाइन पॉसिबल है आपके अकॉर्डिंग? आपके अकॉर्डिंग इतनी ऐसी कितनी लाइंस पॉसिबल है जो इन 2 पॉइंट से गुजरती है, इन दोनों से गुजरती है? ऐसा नहीं कि सिर्फ एक से निकल जाए या सिर्फ इससे निकल जाए, दोनों से निकलनी चाहिए। ऐसी कितनी लाइंस है? सी, ऐसे सिर्फ एक ही लाइन हो सकती है। वेरी गुड आदित्य, जस्ट आपने ना एक पोस्टुलेट बना लिया, यही पोस्टुलेट है। आपने क्या इसको कहीं से प्रूफ करा? आपने कहा क्या कुछ ऐसा मैथमेटिकली इसको प्रूफ करा? नहीं, आपने सिर्फ दिमाग लगाया कि यार ये तो कॉमन बात है, ये तो कॉमन चीज है, ये तो बहुत कॉमन चीज है। सो यही होता है पोस्टुलेट, जो बड़ी कॉमन चीज होती है, जो सामने दिखती है, तो हमको बस उसको स्टेट कर देना है कि 2 पॉइंट से निकलने वाली एक ही लाइन हो सकती है। तो यहां से मुझे ये बात पता चलती है कि सर अगर आपके पास ये इंफॉर्मेशन है ना कि एक लाइन इस पॉइंट और इस पॉइंट से निकलती है, तो आपके पास उस लाइन की पूरी इंफॉर्मेशन है। क्यों? क्योंकि ऐसी एक ही लाइन है, ऐसी एक ही लाइन है। बट एक पॉइंट आपको ये कह दे कि एक लाइन है जो इस पॉइंट से निकलती है, एक पॉइंट से निकलती है, देन देयर आर मैनी पॉसिबिलिटीज, आपके पास उस लाइन की पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। दिस इज व्हाट पोस्टुलेट। अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी एक्सटेंड इनडेफिनेटली। ओके, अगर मैं आपको ये लाइन दे दूं, क्या आप इस लाइन को और लंबा कर सकते हैं? यस सर, ये लो, और लंबा कर सकते हो? यस सर, ये लो सेम लाइन को, और कितना लंबा कर सकते हो? सर इनफाइनाइटली, इनफाइनाइटली, लाइक देयर इज नो फाइनाइट वैल्यू कि सर इससे ज्यादा नहीं कर सकते। यू कैन डू इट। सो दिस इज ऑल्सो अ पोस्टुलेट। अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। आप मुझे कोई भी एक पॉइंट दो, सर ये वाला लो, आप मुझे कोई भी रेडियस लो, सर 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तो आप इस पॉइंट से 5 सेंटीमीटर का कोई सर्कल बना सकते हो? हाँ सर, 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ऑब्वियसली बना सकते हैं। इस पॉइंट पे हमें हमारे कंपास की एक जो शार्प वन होती है, शार्प वन को यहां रखना है, 5 सेंटीमीटर ओपन करना है और सर्कल। ओके, axioms are things which are equal to the axioms are general self-evident truth in mathematics. Okay, for example, things which are equal to the same thing are equal to one and other. For example, a b के इक्वल है, b c के इक्वल है, तो a और c भी तो इक्वल हो जाएंगे अपने आप।
बट सर इसका कोई प्रूफ तो दो, इसका कोई प्रूफ नहीं है, ये एक कॉमन सेंस है ना, आपको इसे प्रूफ करने की नीड नहीं है। भाई ए बी के बराबर है तो बी की जगह आप सी को भी रख सकते, और बी सी के इक्वल है तो मैं बी की जगह सी को रख सकता हूँ, हाँ रख सकते हो, तो ए और सी अपना आप इक्वल हो जाएंगे। दैट्स व्हाट एक्सियम्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट proof and theorem in Euclid geometry. Euclid system relied on providing theorem statements that are logically derived from their definition, axioms and postulate. Definition, axioms and postulate. Okay, definition, sir, like defining something. For example, point. What is point? A non-dimensional thing which represent a position in a space. This is definition. Is a definition. Axioms, A is equal to B, B is equal to C, then A and C must be equal. So axioms are what? They are truth, evident, truth, self-evident truth, self-evident truth in mathematics. Okay. Then sir, what is postulate? Postulate are like you will see in nature that something happening. Like for example, sir, from 2 points you can always make a line, or 2 points can be always connect with a single line, always, and that line will be what? Unique. That line will be unique. Like you cannot give me two different lines which connect these 2 points, you can only give me one single line. My next class will be tomorrow for statics. Okay, sum of two line segment. Okay, A, B and C are 3 points on a line. Okay, there are 3 points. 1, 2, 3. There are 3 points A, B and C, and they are in a single straight line. Okay, it's not look like straight line, but let's say assume it's a straight line. Can I say that sir A से B का जो distance है and जो B से C का distance है वो A से C के बीच का distance है? Can I say it? Yes sir, you can say it. Do I have to prove? No sir, it's like logical thing. You don't have to prove it. We can easily see this. If you have to reach from A to C, you have to reach first B. You have to cover this distance first, then this distance first. So A to C is equal to AB plus BC. AB plus BC. Okay. This can be understood geometrically by noting that the length of AC is just the combined length of AB and BC. Okay. Construction and equilateral triangle. Okay, how to make a equilateral triangle? Make, sir, timing, same timing, 5 p.m. Let's say I have this AB. I have to use this line AB to make circle. Oh, sorry, to make a equilateral triangle. Okay, if I place my sharp point of my compass here and pencil here, what will happen? Sir, you will get a circle like this. Okay. I will get circle like this. Now, same size. You don't have to change the size of compass. Put your compass sharp point here and pencil here. What you will get? You will get this circle. Okay. Now see this point. Sir, this point lies on this circle and this circle also. If I connect this and if I connect this, what is the value of this part? R. What is the value of this part? R. And what is the value of this part? R. So R, you have your equilateral triangle. But what is the proof that they are equal? Make 180. Yeah. What is the proof that they are equal? Sir, we know that if you don't change the radius of a circle, then from this point to this boundary of this circle will be equal to radius, and for this radius and this radius they are equal. Is this also a radius? Yes sir, it is also radius. You consider this as a center and you start your circle from here. This point lies on the circumference of this circle, so this value is R. Or if you take this as a center, then this point lies on this circle, then this is R. Now this point to this point lies on a circumference, and this point is the center, then this is R. And this point is the center and this point lying on a circumference of this circle, then this is R. Then what is the definition of equilateral triangle? Sir, all three sides should be equal. यहाँ पर तीनों sides equal है because तीनों sides R के equal है.
दिस साइड इक्वल टू आर, दिस साइड इज इक्वल टू आर, दिस साइड इज इक्वल टू आर, देन क्या ये साइड्स आपस में भी इक्वल होगी? यस सर, यू हैव एक्सियम्स ना दैट two objects are equal to a same object, then those two objects will be equal to each other. Okay, A equal to B है, RRR is the movie, yeah I know, South Indian movie. Okay, let's talk about Euclid axiom, also called as common notion, are universally accepted truth in geometry that do not require proof. These axioms serve as a foundation principles for which other geometric properties and theorems are derived. ये axioms है, इनको प्रूफ करने की नीड नहीं है. इनका यूज हम क्यों करते हैं? इनका यूज हम करते हैं कोई बड़े थ्योरम को प्रूफ करने के लिए. ओके, नाउ इक्वालिटी ऑफ इक्वेशन, इक्वालिटी ऑफ इक्वल्स, सॉरी इक्वालिटी ऑफ इक्वल्स. If two things are equal to the same thing, they are equal. We have talked about this many times कि A अगर B के इक्वल है और C इक्वल टू स्मॉल b, लेट्स टेक कैपिटल B. ओके, A B के इक्वल है, C भी B के इक्वल है, सो A एंड C भी इक्वल होंगे. दैट्स व्हाट दिस एक्सियम सेज. नेक्स्ट वन, एडिंग इक्वल्स. ओके, have you seen the weighting machine, mechanical weighting machine? If you have a weighting machine, if you place 5 kg here, 5 kg here, it will be in equality, it will be in balance. If you increase this weight by 1 kg and increase this weight by 1 kg, that will be equals also, because you have now 6 and 6. Increase this by 5, increase this by 5, again they will be equal. So that's what it says. If two things are equal, for example AB is equal to CD, AB is equal to CD, and you have EF is equal to GH, they are equal. So equal things if I add them, अगर मैं इनको equal things को यहाँ मैं add करूँ, अगर मैं equal things को यहाँ add करूँ ना, तब भी equality बनी रहेगी. अगर equal things को मैं add करूँ तो equality बनी रहेगी. Okay, for example sir 5 is equal to 5, if you add here 2 and you add here 2, the equality will hold, equality will hold, equality बनी रहेगी. That's the example. Sir, this is a common sense. I know this is a common sense, but thinking about this like 2300 years ago, that's what make him a mathematician. That Euclid ने ये 2300 साल पहले सोचा ये सब बातें, तो ये चीज उसे एक मैथमेटिशियन बनाती है. Now subtracting equal, same चीज सर, you have 5 is equal to 5, अगर आप यहाँ से 2 सब्सट्रैक्ट कर दो, यहाँ से भी 2 सब्सट्रैक्ट कर दो, तब भी इक्वालिटी बनी हुई रहेगी. That's what this axiom says. Now next, coincides of equal things. Okay, are equal to each other. Things that coincide with one and other are equal to each other. Let's say सर इसका मीन्स है कि अगर एक चीज दूसरे को पूरा कवर कर ले और दूसरी भी पहले को पूरा कवर कर ले तो वो इक्वल है. सर ये आपका हाथ है, ये मेरा हाथ है, ये मेरी फिंगर है, मेरी फिंगर को मेरे हाथ ने कवर कर लिया तो ये इक्वल है? नहीं, बिकॉज मैंने कहा था अगर मेरा हाथ मेरी फिंगर को कवर करता है और मेरी फिंगर भी मेरे हाथ को कवर कर ले तो ये इक्वल है. बट ये ट्रू, you ignored me, कोई तो करो. No, I didn't ignore you. Other guys they are not messaging. What I can say, what I can do for that. So हाथ और ये मेरा एक हाथ और ये मेरी फिंगर इक्वल नहीं है. Why? Because हाथ तो मेरी फिंगर को कवर कर देता है, लेकिन मेरी फिंगर मेरे हाथ को कवर नहीं कर सकती. But if I take this my hand, left one, and this is my right one, yeah, this one is covering my left hand is covering my right hand. Now my right hand is covering my left hand, so both are covering each other because they are equal. They are equal. No sir, I can see a small part of your head. I am just talking about theoretically. If two things are equal, for example you have two triangles, equal triangles, okay, they don't look like equal, consider them equal. If you place this triangle on it, it will be completely hide. अगर तुम इसको इसके ऊपर रख दो ये वाला पूरा छुप जाएगा, और इसको इसके ऊपर रख दो ये पूरा छुप जाएगा, तो ये दोनों तरफ से हो रहा है ना, तब हम कह सकते हैं ये इक्वल है. That's what this axiom says. Again what?
होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट। ओके, ऐसा हो सकता है क्या? तुम मुझे बता सकते हो? अगर किसी इंसान का बॉडी वेट 80 केजी है या तुम्हारा बॉडी वेट 70 केजी है, तो तुम्हारे हाथ का वेट 70 से ज्यादा हो सकता है क्या? अगर आपका वेट 70 केजी है तो आपके हाथ का वेट 70 केजी से ज्यादा हो सकता है क्या? नहीं होगा सर, उससे हमेशा कम ही होगा। सो ये भी एग्जाम्स ये कहता है कि जो कोई होल पार्ट है, ओके सी, अगर आपका अगर कोई भी चीज है लाइक दिस लाइन, दिस लाइन, इस लाइन का कोई भी एक पार्ट ले लो, दिस लाइन का कोई भी एक पार्ट ले लो, ये पार्ट हमेशा लाइन से छोटा ही होगा। ये तो सर कॉमन सेंस की बात है। अगर कोई इंसान 80 किलो का है तो उसका हाथ कभी 80 किलो से ज्यादा हो ही नहीं सकता, 80 किलो से कम ही होगा, 80 किलो से कम ही होगा, ज्यादा तो नहीं हो सकता, और कम इक्वल भी नहीं होगा, कम ही होगा। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो यही कॉमन सेंस हमारे यूक्लिड ने कर दिया और वो मैथमेटिक्स में अमर हो गए। तो उन्होंने 2300 साल पहले कर दिया, उन्होंने सबसे पहले ये बात कर दी तो वो अमर हो गए और हम नहीं हो पाए। तो हमेशा होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट, हमेशा पूरा हिस्सा उसके एक छोटे पार्ट से बड़ा ही होगा। डबलिंग ऑफ इक्वल थिंग्स। ओके सर, मेरे पास 4 रुपए है और आपके पास भी 4 रुपए है, हम दोनों के पास बराबर है। अगर हम दोनों के पास डबल हो जाए तो फॉर एग्जाम्पल सर आपके पास भी जो है उसका डबल हो जाए और मेरे पास जो है उसका भी डबल हो जाए, तब भी हम बराबर रहेंगे क्या? ऑब्वियसली बराबर रहेंगे। तो ये चीज क्या बोलती है कि भाई आपके पास कोई चीज है, लेट्स से a is equal to b, if you multiply both things by 2 then 2a should be equal to 2b। और ये सिर्फ 2 के लिए लागू नहीं होता है, 3 4 5, 2.5 किलो का हाथ, यहां पर 2 की जगह 3 भी आ जाता तो 3a is equal to 3b, 5 आ जाता तो 5a 5b, 6 आ जाता तो 6a is equal to 6b। दो इक्वल चीज है, उनका मल्टीप्लाई किसी एक नंबर से कर दो ना तो जो रिजल्ट होगा वो भी इक्वल होगा। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है सर, एग्जाम्स होता ही कॉमन सेंस है। हैविंग ऑफ इक्वल थिंग्स, अगेन सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड में भी ये होता है। सर आपके पास 4 रुपए है, मेरे पास भी 4 रुपए है, अगर मेरे रुपए को आधा कर दे और आपके रुपए को आधा कर दे तब भी हम बराबर ही पे हैं। हाँ, क्योंकि 4 का आधा 2, आपके पास 4 का आधा 2, तो सर हम लोग अभी भी बराबर ही पे। तो ये सिर्फ मल्टीप्लाई पे नहीं, डिवाइड पे भी लागू होता है। कॉमन सेंस, अगेन कॉमन सेंस। और ये कॉमन सेंस बना बनाकर यूक्लिड एक मैथमेटिशियन, ग्रेट मैथमेटिशियन बन गए। ओके, दिस इक्वेशन, हाउ टू यूज दिस, लाइक सर ठीक है हमें ये पता है कि दो चीजें इक्वल है, आप उसमें दोनों में कुछ भी जोड़ दो तब भी इक्वल है, दोनों में से सेम चीज को घटा दो तब भी इक्वल है, दोनों का मल्टीप्लाई किसी सेम नंबर से कर दो तब भी इक्वल है, दोनों का डिवाइड किसी नंबर से कर दो तब भी इक्वल है। इसका यूज क्या है? इसका यूज यहां है। ओके ओके आदित्य, सो y minus 10 is equal to 13. Now if I add 10 here and add 10 here, equality will hold. Now 10 and 10 they will cut, y is equal to 13 plus 10 23. That's it. Okay, so here you can use this axioms. Rohit and Ram have the same weight. If both of them loses 5 kg weight, how will you come their new weight? Compare their new weight. Okay, let's say Ram का है RW. Okay, both are Ram and Rohit, both are R1W and another one is R2W. Okay, they are equal. Now sir, if you subtract 5 from both sides ना, equality will hold. Equality will hold, क्योंकि सर दोनों इक्वल है, दोनों में से कुछ भी एक इक्वल चीज को घटाओगे तो इक्वालिटी बनी हुई रहेगी। Now let's go for next. Now postulates. Okay, how to pronounce this? Posh, P-A-W, you can say. Chu, C-H-W, and late. Postulate. Equivalent version of Euclid fifth postulate. Okay. Euclid postulates. Postulate are specific assumption about geometry that Euclid assumed to be true. These postulates are the basis for all further construction and proofs in geometry. Euclid's 5 postulates are the foundation of classical geometry.
अब ये पोस्टुलेट क्या थे कि भाई ज्योमेट्री के अंदर कुछ, सर एक बार देखना स्ट्रीम में कितने लोग हैं, 8 है। अब हुआ क्या कि सर यूक्लिड ने कुछ बातों को सच माना कि यार ये सच होती ही होती है, मुझे इन्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई चीज बड़ी चीज को प्रूव करना है ना, मुझे इनका यूज करना होगा। सर फ्रॉम व्हेन यू आर इन टीचिंग इंडस्ट्री फॉर लास्ट आई थिंक 3 years, I just have cleared my MSc from IIT Dhanbad in this year 2025. So professionally from this year, unprofessionally I have been teaching for more than 4 years. Okay, now see, so Euclid ने क्या बोला कि इनको तो मैं सच मान लेता हूँ कि ये तो होता ही होता है, ये कॉमन सेंस वाली बात है, मुझे इन्हें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, बट इन कॉमन सेंस को बिल्डिंग ब्लॉक्स बना के मैं एक बड़े प्रूफ को बना सकता हूँ। तो ये छोटे प्रूफ आपको आने चाहिए, तभी आप किसी बड़े प्रूफ तक पहुंच पाओगे। फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू सम theoretical part, or I will give you some, like you know, if you have two parallel lines, sir doubt, yeah, you can let me know your doubt here in comment section। आपके पास दो पैरेलल लाइंस है, इस पर आप एक तीसरी लाइन ऐसे डाल दो, इसका और इसका सम हमेशा 180 होता है, क्यों? इसका और इसका सम हमेशा 180 होता है, क्यों? ये भी आपको कहां से मिलता है? यूक्लिड पोस्टुलेट से। यू विल सी दिस नाउ, दिस अ स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। एक स्ट्रेट लाइन दो पॉइंट के बीच में हमेशा बनाई जा सकती है। Feels so unnatural. I don't think so. It feels so unnatural. See, fifth one na, in fifth one, do you believe that अगर आप एक दो लाइंस पर हो, if you do you believe that you and me both are running in a same direction. For example, I am running in direction and you are also running in this direction, and we both are trying to reach to this camera. Do you believe हम लोग कभी ना कभी आपस में टकराएंगे? आपको ऐसा लगता है कि हम कभी ना कभी टकराएंगे? Why we can't prove it from first four? Let's see, I will tell you. Let's see first these things. A straight line can be drawn from any one point to any other point. Okay, आप कोई भी दो पॉइंट ले लो, इसके बारे में हम शुरू में बात कर चुके, ये दोनों हमेशा किसी एक यूनिक लाइन से हमेशा कनेक्ट होंगे। ओके, now a terminated line can be extend indefinitely in both the direction. yes sir, एक लाइन जो है मैंने तो सिर्फ A और B के बीच में बनाई, क्या उन्हें मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ? हाँ कर सकते हो। आपको बस ध्यान रखना है कि आपको ये एंगल हमेशा 180 डिग्री रहना चाहिए। लाइक आप ये लाइन नहीं कर सकते, अब ये कंटिन्यू नहीं होगा, ये एक्सटेंड नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये एंगल 180 नहीं रहा। ओके, स्ट्रेट एंगल बनना चाहिए। नाउ नेक्स्ट पोस्टुलेट, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। हाँ, आप मुझे कोई भी एक पॉइंट दो और आप मुझे कोई भी एक रेडियस दो, मैं हमेशा एक सर्कल बना के आपको दे दूंगा। बट सर इसको मैं आप प्रूफ कैसे करोगे कि आप हमेशा बना पाओगे? और ऐसा भी टाइम आएगा जब आप नहीं बना पाओगे। तो उसके लिए एक चीज होगी कि सर मान लो मैंने आपको एक ऐसा पॉइंट दे दिया और एक ऐसी रेडियस दे दी जो आप इस पॉइंट से उस तक बना ही नहीं सकते। ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? व्हाट इज सर्कल? सर सर्कल एक है ना पाथ है, सर्कल एक पाथ है। कैसा पाथ है? ये एक ऐसा पाथ है कि इस पॉइंट और एक फिक्स पॉइंट के बीच की दूरी हमेशा सेम रहती है। सर्कल इज जस्ट अ पॉइंट पाथ in a such a way that variable point and distance between the variable point, because of that variable point we are getting circle, and that variable distance between variable point and a fixed point always remain constant. Okay, तो सर अगर आपको मैं ये पॉइंट दे दूं और आप इसकी मान लो रेडियस मैंने दे दी 4 और आप बना नहीं पा रहे हो, क्या प्रॉब्लम हो सकती है? कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, क्योंकि मुझे क्या चाहिए कि इस पॉइंट से 4 की डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको पकड़। इससे 4 की डिस्टेंस पे कितने पॉइंट है? सर इधर भी हो सकता है, 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 इधर भी हो। सर आपको कैसे पता हर डायरेक्शन में हो सकता है? बिकॉज हमें एक पोस्टुलेट पता है, एक एक्सियम्स पता है। क्या?
कि सर एक पॉइंट से आप इनफाइनाइटली मैनी लाइंस निकाल सकते हो, एक पॉइंट से इनफाइनाइटली मैनी लाइंस निकाल सकते हो हर एक डायरेक्शन में, हर एक डायरेक्शन में। ओके, कोई भी मैं एक पॉइंट पकड़ता हूं, लेट्स से दिस पॉइंट, सो मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से कनेक्ट कर सकता हूं, तो इसकी कोई ना कोई लेंथ होगी, इस लाइन की कोई ना कोई लेंथ होगी। ओके, बट हम क्या करेंगे, 4 के बाद रुक जाएंगे तो हमें ये पॉइंट मिल जाएगा। ओके, बट सर अगर ये डिस्टेंस है ना इससे कम हुआ तो फिर क्या करोगे? लेट्स से दिस इज माय सेंटर, this is my center and there is another point in this direction, okay, and this line, the distance of this line is 2, but we need what, we need 4, we need distance of 4 from this direction, but sir we know very well from the last postulate that you can extend this line, you can extend this line, okay, locus of a point, that this locus of such a point which has the constant distance from a fixed point, which has a constant distance from a fixed point, okay, that's what a circle। तो यहां से मैं बता रहा हूं, आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यार ये एक बहुत कॉमन सेंस वाली बात है कि आप कोई भी एक पॉइंट दे दो और कोई भी एक रेडियस दे दो, मैं हमेशा एक सर्कल बना सकता हूं। जैसे कि मैंने यहां बोला कि भाई इस पॉइंट से आप कितनी लाइंस निकाल सकते हो? सर इनफाइनाइटली मैनी इन एनी डायरेक्शन, ओके, इन एनी डायरेक्शन, मेक इनफाइनाइट लाइन। नाउ अब आप क्या करो, इस पॉइंट से आप है ना उस लाइन पर 4 स्टेप यानी अप टू रेडियस स्टेप चल के मार्क कर दो, 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 एंड क्या होगा जब आप इनफाइनाइटली मेनी लाइंस बनाना शुरू करोगे, आपसे क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक फॉर्म हो जाएगा सर्कल। सो आप ऑलवेज एक सर्कल बना सकते हो विद एनी गिवन सेंटर एंड विद एनी गिवन रेडियस। For if you are talking about this chapter, no, you can't go from here, but yeah, every postulate is different. You will understand, we have done 3 postulate and there are 5 postulate. You will understand the 4th and 5th, you will understand the 4th and 5th, don't worry. Now let's talk about this one. All right angles are equal to one another, okay, ये सिर्फ है ना राइट एंगल पे, सिर्फ राइट एंगल पे ही लागू होगा क्या? अनइक्वल का मतलब क्या होता है? इक्वल का मतलब होता है सर कि आप इसको उठा के इसके ऊपर रखो, ये पूरा पूरा कवर हो जाएगा, या इसको उठा के इसके ऊपर रखो, ये पूरा पूरा कवर हो जाएगा। लेकिन सर मान लो एक मैंने राइट एंगल ऐसा बनाया और एक राइट एंगल तो मैंने ऐसा बनाया, अब तो ये कवर नहीं हो रहा है, अब तो ये कवर नहीं हो रहा है, ये इसको कैसे कवर करेगा? बिकॉज एंगल इज नॉट अबाउट द लेंथ ऑफ हैंड ना, एंगल इज नॉट अबाउट लेंथ ऑफ हैंड, एंगल इज नॉट अबाउट लेंथ ऑफ हैंड। ये लेंथ कितनी लंबी है उससे एंगल को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने एक 60 डिग्री का कौन बनाया, 60 डिग्री का एंगल, 60 डिग्री एंगल बनाया, अब आप इसकी हैंड को कितना ही स्ट्रेच कर दो, कितना ही स्ट्रेच कर दो, ये 60 का 60 रहेगा। ओके, सो आप जब इसको उठा के इसको ऊपर रखोगे तो ये जो हिस्सा है, ये पॉइंट, ये पूरी तरीके से कवर हो जाएगा। और सर सिर्फ एक पॉइंट ही हो पाएगा? नहीं, हैंड का कुछ पार्ट, दोनों हैंड का कुछ पार्ट हमेशा कवर होगा। नो मैटर आप इसको कितना छोटा बनाओ, हमेशा यहां पर थोड़ा सा और यहां पर थोड़ा सा कवर होगा, हमेशा होगा। ओके, सो एवरी 90 डिग्री एंगल इज all equal. Equal means they can cover each other no matter what is the length of their hand. Okay sir, if we make equal hands then there is no problem, it will cover completely. That's what the fourth postulate. Now let's talk about this postulate. So आप में से एक ने कहा था कि सर हम अदर postulate के बेस पे इसको क्यों नहीं प्रूव करते, ये अननेचुरल लगता है। ये आपको अननेचुरल क्यों लग रहा है? सी नाउ डिस्कस करते हैं। सर इन दोनों का सम 180 से कम है, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि हमेशा यहाँ कहीं ना कहीं मिलेंगे, हमेशा कहीं ना कहीं वापस मिलेंगे? तो चलो इस पर सोचते हैं। देखो, अगर इन दोनों का सम जो है 180 से कम है, 180 से कम है, तो तीन अपन अलग अलग केसेस बनाते हैं। तो सर ये एंगल भी 90 से कम होगा और ये एंगल भी 90 से कम होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ये एक केस है। ये एंगल भी 90 से कम होगा, ये एंगल भी 90 से कम होगा। ओके, अब अगर मैं यहाँ खड़ा हूं और मुझे है ना इस लाइन के साथ 90 से कम का एंगल बनाना है, सॉरी इस लाइन के साथ 90 से कम का एंगल बनाना है। अभी मैं यहाँ खड़ा हूं और मेरे इस हाथ के साथ और मेरी जो आइस की डायरेक्शन है उनमें 90 डिग्री का एंगल है।
उनमें 90 डिग्री का एंगल है, मुझे 90 से कम करना है, तो मुझे थोड़ा सा ऐसा होना पड़ेगा। ओके, वन ऑफ यू इज स्टैंडिंग हियर, और उसका ये हाथ और उसकी जो आई साइड्स है उसकी डायरेक्ट उनमें 90 डिग्री एंगल, इसको थोड़ा आपको कम करना होगा, 90 से कम करना होगा, इतना कर लेते हैं। डोंट यू बिलीव कि ये दोनों कभी ना कभी एक दूसरे से आगे टच करेंगे, ये कभी ना कभी एक दूसरे को तो क्रॉस करेंगे ही करेंगे। यस सर, परफेक्टली करेंगे। बट सर ये तो केस हुआ इस बात का, ये तो केस हुआ इस बात का कि जब दोनों ही 90 से कम है, उसका क्या करें, एक को 90 से बढ़ा दिया तो। फॉर एग्जाम्पल ये भी तो हो सकता है ना सर, कि ये बन जाए 120, ये बन जाए 120 और ये बन जाए 50, ये भी तो हो सकता है ना। हाँ हो सकता है, हो सकता है, लेकिन इनका सम अभी भी 180 से कम है, हमने सारी पोजीशन करी, बट ये दोनों 90 से कम, दोनों 90 से कम नहीं, दोनों 90 से कम नहीं, या फॉर श्योर दे आर बोथ आर नॉट लेस देन 90। ओके, नाउ लेट्स फाइंड आउट दिस एंगल, let's find out this angle. Sir, this angle will be less than this angle. Why? This angle will always less than this angle. This angle will always less than this angle. But sir, how can you say that? Let me tell you. See, let's say this angle 1 and angle 2. Angle 1 and angle 2. ये less than 180 है, ये less than 180 है, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा सर 180 माइनस 1। अब मुझे ये बात का प्रूफ करना है, मुझे ये बात का, सॉरी ये एंगल एक्चुअली ग्रेटर होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 120 होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 120 होगा, मैंने उल्टा बोल दिया, ये हमेशा ग्रेटर होगा। अब मुझे ये बात प्रूफ करनी है कि ये एंगल जो है, ये एंगल हमेशा इससे बड़ा है, 2 से बड़ा है। बट सर इससे होगा क्या, बताता हूं। तो सर ये तो सिंपल है, आप यहां पर है ना, यहां पर करो -1। सी आई एम यूजिंग एक्सियम्स, what's your name? See how to prove them, that's the problem now, that's what the meaning of postulate, that postulate you don't have to prove them, they exist, they exist. For example, I'm standing on earth and my angle between me and earth is 90 degree. You are also standing on earth, but you are standing like this, like this. Then how can I believe that you are standing on 90 degree? If you try to stand on 90 degree, you will stand just like me, you will stand just like me. So everything which has a 90 degree angle, they are same with, like let's say there is a one tree and one standing man, they are standing in a same way, like no one is tilt to each other, no one is not tilt to each other. So we can say they both are on 90 degree angle. So that's why we can say that every 90 degree angle is equal. Okay, now one of your question that कि सर ये बहुत unnatural लगता है, हम उस पर बात कर रहे हैं, तो उसमें हमने एक केस तो हमने बात कर ली, एक केस कौन सा, कि सर ये दोनों 90 से कम है, ये दोनों 90 से कम है, उसमें हमने बात कर ली कि ये हमेशा कभी ना कभी जाके तो आपस में टकराएंगे, हमेशा कभी ना कभी जाकर तो आपस में टकराएंगे। ओके, नाउ अब बात करते हैं कि इसमें से एक 90 से ज्यादा है। सर दोनों 90 से ज्यादा नहीं हो सकते, बिकॉज दोनों का सम क्या है, दोनों का सम क्या है, 180 से कम, लेस देन 180। तो दोनों जो है 90 से बड़े तो नहीं हो सकते, एक हो सकता है, दोनों नहीं हो सकते। ओके, नाउ आई एम ट्राइंग टू फाइंड दिस एंगल, नाउ आई एम ट्राइंग टू फाइंड दिस एंगल। सर ये एंगल जो होगा ना वो हमेशा 2 से बड़ा होगा, कैसे प्रूफ करा। और यहां पर देखना हमने यूक्लिड का एक्सियम ही यूज करा है। कैसे, यूक्लिड का एक्सियम कहता है कि भाई दो चीज अगर इक्वालिटी में था, वो इक्वालिटी में था, बट वही चीज है ना आप इन इक्वालिटी में भी यूज कर सकते हैं अगर बोथ आर पॉजिटिव नंबर। लेट्स से बोथ आर पॉजिटिव नंबर, 2 इज लेस देन 5, अगर मैं दोनों में से 1 को सब्सट्रैक्ट कर दूं तब भी ये बनी हुई रहेगी, ये इनइक्वालिटी बनी हुई रहेगी। ओके, सो आई एम जस्ट सब्सट्रैक्टिंग वन एंगल एंड यू हैव टू सब्सट्रैक्ट वन एंगल हियर आल्सो। सो डोंट यू बिलीव दैट दिस वैल्यू विल बी व्हाट, एंगल 2 लेस देन 180 minus angle 1, and 180 minus 1 is what, this angle. But sir, how to prove that these two lines will always meet on this point? We can prove. Now tell me, there are two cars, they are running in the same direction. One car speed is 100, one car speed is 10. The speed with the 10 car, the speed whose speed is 10 is like
that car start first. Now that car is on track. Let's say this is track, and they are running in this direction. This is your 10 kilometer per hour speed car. This is your 100 kilometer per hour speed car, and they are running here. Do you believe that one day, or 1 second, or on a second, one day, whenever in future, this car will cross this? Do you believe it? That this car will cross it? Obviously, sir, it will happen. So in the same way, this one is going with this incline, but this incline is less than this incline. Then one day this will go more deeper, more down to earth, more down. Why, sir? What? I didn't get it. See, there are two inclines. One is this and one is this. Okay. इसका incline angle कम है, इसका ज़्यादा है. इसका incline कम है, इसका ज़्यादा है. बट ये ऑलरेडी पहले से थोड़ा नीचे थी, और ये हाइट है. ठीक है, ये हाइट है. इन दोनों ने स्टार्ट करा, लेकिन ये ज़्यादा हाइट से स्टार्ट करा और इसने थोड़ा कम हाइट से स्टार्ट करा. तो ये पहले ज़्यादा नीचे जा रहा है, ये ज़्यादा नीचे है, ये थोड़ा कम नीचे है. बट इसका एंगल, नीचे जाने की जो एंगल है वो ज़्यादा स्ट्रिप है, वो ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा तेजी से नीचे जा रहा है. और एक ना एक टाइम ऐसा आएगा कि ये इसको, अब ये ज़्यादा नीचे हो जाएगा. अगर ये ज़्यादा नीचे हो गया तो बीच में एक ऐसा पॉइंट तो होगा जहां इसने इसको क्रॉस किया होगा. एक तो ऐसा पॉइंट होगा जहां इसने इसको क्रॉस किया होगा. दैट्स व्हाई यूक्लिड ने ऐसा ही कुछ कॉमन सेंस यूज करा और ये पोस्टुलेट दे दिया कि भाई अगर इन दोनों एंगल का सम 180 से कम है तो ये हमेशा आपस में कहीं ना कहीं टच होंगे, आपस में कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे मिलेंगे. ओके, एनी डाउट नाउ? सो इस वाले जो पांचवा आप कह रहे थे कि ये बहुत नेचुरल नहीं लगता है, ये नेचुरल नहीं लगता है, तो हमने इसको दोनों वेज में, दो केस में डिवाइड करा. वन केस बोथ आर लेस देन 90 डिग्री, अनदर केस वन इज एटलीस्ट ग्रेटर देन 90. हमने दोनों केस में ये नेचुरली दिखा दिया कि दोनों हमेशा कभी ना कभी टच करेंगे, ये दोनों लाइंस आपस में कभी ना कभी टच करेगी. ओके, सो equivalent version of Euclid fifth postulate, Euclid fifth postulate, also known as the parallel postulate, is one of the most important and widely discussed postulate in Euclidean geometry. It states that if straight lines falling on a two straight lines make the interior angle on the same side less than two right angles, then the two straight lines, if extended indefinitely, meet on that side on which the angles are less than two right angles. Less than 180 angle, less than 180. And if you have two parallel lines, then it will be make 90 degree. Okay, not 90 degree, the sum of them will be equal to 180 degree. Sir, why not 90 degree? What I put this line. Now this is not 90, this is not 90, but sum of them will be always 90. But sir, why not 180? Sum of them will be always 180. Sir, why not greater than 180? Because greater than 180 we already have this one. So if you have greater than 180, then other part will be less than 180. Okay, and if other part is less than 180, these two lines will meet on some point. Okay, if these two lines will meet on some point, then the line can't be parallel. And in the beginning I told you that if you have two lines, if you have two parallel lines, so if two are parallel lines, then sum of them must be 180 degree. Sum of these interior angle must be 180 degree, otherwise they are not parallel lines. Okay, so we have completed this chapter, and I don't think so you will get many questions from this chapter. You will get about 1 or 2 questions in your final examination from this chapter. Anyone, any other doubt? Sorry, any other doubt? Okay guys, thank you so much. Bye bye.